अपनी पार्टी। मीनल जैन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Good evening. I'm very well, thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मीनल जैन जी ये बताएं, जो केजरीवाल मॉडल है अब हर एक को इसको कॉपी कर रहा है, एटलीस्ट इन मैनिफेस्टोज। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, बाकी सबका देखें, आपका जो मैनिफेस्टो है उसको कट एंड पेस्ट करके हर जगह पे लगा दिया है। यू नो, फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर विमेन, वेरिएशन ऑफ द मोहल्ला क्लिनिक्स, और बाकी सारी जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के मुफ्त वगैरह वगैरह। तो जैसे प्रदीप जी ज़्यादातर ये सवाल पूछते हैं, आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि फिर आपके खुद के केजरीवाल मॉडल का क्या होगा? अगर कांग्रेस भी वही चीज़ ऑफर कर रही है तो फिर आपकी जो 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 योर वोट बैंक, व्हाट हैपेंस टू दैट, मीनल जैन जी? तो ऐसा है कि जो अरविंद जी ने और जो विजन देखा है देश के बच्चों के लिए, देश की जनता के लिए, तो हम लोग उसको हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अरविंद पहले भी कह चुके हैं, अरविंद जी, कि हम कोई ये लेके तो निकले नहीं अश्वमेध यज्ञ करने कि जी हमें पूरे देश की फतह करनी है। अगर कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दूसरी पार्टी हो जो हमारे मॉडल को कॉपी करके इस देश की जनता का भला कर सके, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वो करने के लिए जो विजन चाहिए या जो नियत चाहिए, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। तो वो नियत लाना, उस तरह का ढांचा बनाना, उस तरह से अपने कैडर को मोटिवेट करना कि किसी भी हाल में आपको ये चीजें, हमारा अभी सेट एजेंडा है। नाउ एनीबडी कैन कॉपी पेस्ट इट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इट. Achievement of that things which we have achieved in Punjab, in Delhi, is almost unachievable for anybody else, because they have a very clear intent of giving education. The whole party believes their highest budget allocation is in education. They believe in equality and empowerment of women, so they have given this free ticket to all the women in Delhi, which is actually helping the women in Delhi in such a big way, which nobody has ever thought of. Nobody ever analyzed that what will be the outcome of it. Now a Delhi woman with her children, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से रोज घूमती हैं, काम के लिए बाहर निकलने लगी हैं। जहां उन्हें लगता था कि अरे हम काम ढूंढने जाना है तो कैसे जाएं, बस का खर्चा कहाँ से लाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों से उन्होंने काफी सब सोशल फैब्रिक को बदला है। तो वो अगर कोई कॉपी कर सके, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी के अलावा कर पाएगी, पर करे तो वेल एंड गुड। और वोट बैंक जहां तक है, तो जनता देख रही है। जनता को अगर आम आदमी पार्टी पे विश्वास होगा और वो आम आदमी पार्टी वाला गवर्नेंस चाहेगी, तो हर जगह पूरे देश में आएगी आम आदमी पार्टी। बट ओवर हियर आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे भगवंत मान जी हैज वर्क। भगवंत मान जी ने जिस प्रकार सुधारीकरण किया है स्कूल्स का, स्पेशली इन द माझा बेल्ट, इन पंजाब की जो बॉर्डर बेल्ट है वहाँ पर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्कूल का, माशाल्लाह, मतलब ज़बरदस्त। आई नेवर थॉट इट वाज पॉसिबल, बट ही इज एक्चुअली डन इट। नाउ ऑफ कोर्स ही इज़ गॉन टू मालवा ऑल्सो। वो खुद तो वो माझा से ही आते हैं, लेकिन मालवा बेल्ट के अंदर भी अब चले गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ें करी हैं। और साथ में वो क्या है, वो क्या स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस वगैरह, ये सब चीज़ें भी शुरू करी हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन आप ये बताएं, ये अचीवमेंट सबके सामने हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स के अचीवमेंट सबके सामने हैं, सर्विसेज एट डोर स्टेप सबके सामने हैं, लेकिन जो एक क्या कहें उसको, काला बादल कहें या खतरा कहें, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर मंडरा रहा है, वो ये है कि भाई जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जी हो गए, हमारे मनीष सिसोदिया जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए, ये तीनों की तीनों जेल में हैं। राघव चड्ढा जी के खिलाफ भी कुछ अब उल्टा सीधा कुछ चल रहा है। अब ये भी बात आ रही कि शायद अरविंद को भी अरेस्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ों का मुकाबला आम आदमी पार्टी कैसे करेगी, वो ज़रा बताएं मीनल जैन जी। देखिए, अभी हमारा देश का जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, उनमें अगर इतनी समझ होती, जिस तरह अरविंद जी बोलते हैं उन्हें कि चौथी पास राजा को नहीं बनाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर,
तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आखिर देश के प्रधानमंत्री तो हम सबका प्रधानमंत्री है, तो उनको सोचना चाहिए था कि जनता के लिए आप खुद ही बता रहे हैं कि इतना सारा पंजाब में काम हो रहा है, दिल्ली में काम हो रहा है, तो क्या भाजपा को या मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा था कि इतना सारा काम हो रहा है? पर अगर उन्होंने एक पॉलिटिकल वेंडेटा के अंतर्गत उन हमारे सारे नेताओं को अंदर किया है, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी जो काले अक्षरों से लिखी जाएगी इतिहास में। हमेशा लोग याद रखेंगे कि एक काम करने वाली ईमानदार पार्टी के उच्च शीर्ष नेताओं को मोदी जी ने अंदर डाला था। ये एक प्रक्रिया है जो हर समय हर इस तरह के जब पॉलिटिकल इसमें जब मेजोरिटी में होती है कोई एक पार्टी और काफी टाइम से होती है, तो उसके नेताओं में ये एग्रेशन या ये घमंड आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं समझती और अपने पावर का पूरा गलत इस्तेमाल करती है, जैसे ईडी और सीबीआई का मोदी जी कर रहे हैं इस समय। तो ठीक है, हमें भी निकलना होगा शायद उस काले बादल से या उस आग से जल के, और उसके बाद देखेंगे, सुबह तो जरूर आएगी। लेकिन Meenal Jain ji, इस रात की सुबह होगी जी। Meenal Jain इस ji, रात you know की what is सुबह। happening is environment is the biggest problem, especially at this particular time, October, November, December. Delhi is totally having a problem. जो cloudy skies हो गए और जो air quality level falling to all time low. Arvind Kejriwal ji has managed. Punjab में उन्होंने through the CM Man, he has already controlled stubble burning. Stubble burning बहुत it's controlled it. The fire farms have stopped 50%, 50% कम हो गए fire farms. Stubble, so they are controlled it. But they are having a problem here in Delhi because of the new Delhi Act, where the government, central government has usurped the powers of the state. तो आज के तारीख में आप कुछ भी enforce करने जाओगे तो it's not possible. Your environment minister from Delhi Gopal ji was trying to enact certain things that was opposed by the DPCC. जिस प्रकार से, तो ये आप कैसे कर पाओगे जब आपके मुखिया केजरीवाल जी खुद दिल्ली में नहीं कर पा रहे, though you have done it in Punjab, trying to stay. So how are you going to come over this crisis? Because if the air quality level is poor and if smoky skies, the fogs are going to disturb Delhi, again the Kejriwal government is going to be pointed fingers at. आप केजरीवाल जी को दोषी पूरे जग दोषी ठहराएंगे. How are you going to see that? How are you going to improve that situation, Meenal ji? अरविंद जी को दोषी ठहराना तो मतलब सारी ही मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि जो काम करता है उसी में आप मीन मेक निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट 100 प्रॉब्लम्स इन अ पर्सन हु इज वर्किंग. इफ समबडी इज नॉट वर्किंग, दिल्ली आज से मैं 10 साल पहले जाती थी तो पूरी हवा में डीजल की बदबू हुआ करती थी, क्योंकि देयर वर जेनसेट्स. बिजली नहीं होती थी, रात दिन जेनसेट चलाने पड़ते थे लोगों को, और वो धुआं पूरे एनवायरनमेंट को इतना खराब करता था. ये पर्ली की समस्या कोई आज की तो है नहीं, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन है. दिल्ली में, अरे बॉम्बे में इतना पॉल्यूशन है. बॉम्बे में बीएमसी हैज बीन अ टोटल फेलियर एंड कंटिन्यूअसली कटिंग ट्रीज विच आर लाइक 100 ईयर ओल्ड. तो एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इन सब के बारे में जितना सचेत आम आदमी पार्टी है, with a minimalistic power which has been given to a government which is a elected government, तो ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने वो भी और भी कम कर दिया. उसके बाद भी अरविंद जी एंड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट एंड भगवंत मान जी have managed to get the pollution down. The AQI has come much lower than what it was last year, and it was a few days तो Bombay was worse than Mumbai, was worse than Delhi. So first time ever Delhi has become not the most polluted city, but it has come much lower than like 7-8 cities of the country. So we are trying hard. We will try to manage. See, farmers are not one or two. They are in thousands. And we have to teach them, make them aware. They should know that early warning can cause so much of pollution and why. And now though we are monetizing their parley. So the parley is used to make the fertilizer and all with the use of enzymes, and also we are working with a lot of bioscientists and agricultural scientists and experts who are teaching the farmers that this much parley, if you make not burn and make a fertilizer and you can sell it back to the government. So they are very happily doing it. And I think by next year you will see a drastic change, and all the transport is now on EV.
so it's all electric. Since we have also like removed all these vehicular CNG vehicles also. Minal ji, So, you got a bigger challenge here in Mumbai. Education sector, BMC, और जिस प्रकार से आप दिल्ली में एक दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, you impress the entire nation कि आपके Delhi public schools are much favored even by the rich and mighty compared to the private schools. You have done a great yeoman service where Delhi is concerned, Delhi model. But BMC is a challenge. बिकॉज आज के तारीख में बीएमसी स्कूल्स तो है, एवरी वार्ड में 2-3 स्कूल आपको हर रिलीजन में आपको मिलेगा, उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे, मराठी, हिंदी स्पीकिंग, यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, बट स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग. जैसे आपका खुद एस्टिमेट था कि ओनली 2.2 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बीएमसी स्कूल्स, whereas in the Delhi public school there 16 lakh students are going, 16 lakh in Delhi public. Now ये ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज यू आर वर्किंग विद आम आदमी पार्टी मुंबई ऑल्सो इन अ बिग वे, क्या ये चेंज करने के लिए आपके पास कोई प्लान है, हाउ टू मेक attractive for all segments of the society to go to BMC schools? Because where I stay in Kalina, I find that BMC school infrastructure is fantastic. They have ground, they have got playground, they have got individual, but इस चीज को उपयोग कुछ हो ही नहीं रहा है. Nothing is really infrastructure that not being utilized. ये 2.2 से लेके 16 लाख तक कैसे पहुंचा? आप कोई प्लान है आपके पास, मिनल जी? Yes, of course, we are working very hard towards BMC and the problems existing in BMC. So now BMC is, there is no elected body in BMC. It is, and above that, they have given this Mr. Mangal Prasad Lodha office in BMC, which is such a position of absolute conflict, because there is a conflict of interest. A builder who is a assembly member is given an office in BMC where all the permissions and all are given directly to him. Now he manages all the BMC day-to-day affair, getting the permissions for wherever buildings he is making. So the latest issue is like hanging gardens. You would have heard that Yes, hanging garden, they are planning to cut 400 trees. So I've been actively working with these people, and all Mumbaikars, in their heart, they want that all Mumbaikar children of their helpers and whoever are little lower middle class people who are not up to the this thing in society, who can send their children to private school, should get good education. So not even the poorest of poor is sending their children to BMC schools. I have myself visited a lot of BMC schools and found that they are in absolute shambles. Not just the infrastructure, because infrastructure wise also they have a classroom, but 3 classes are sitting in one classroom. The teacher is only one. How much she will manage? And there is no motivation in the teachers basically. Whereas we have in Delhi, so we, like Arvind ji actually sent all the teachers. When Manish ji was handling education department, he sent all the teachers for training to Singapore, IIMs, to understand that how to teach, how to actually transform the lives of the children through their means, their small means like happiness curriculum, where the teachers act funny and teach the children. So if a child who's coming from Jhopparpatti is happy in whatever circumstances, he'll be a happy human being. And we have changed the social fabric of Jhopparpattis in Delhi. What earlier used to be, we have absolutely changed it. So it is not difficult for us to replicate the same model in Mumbai. Once we get a majority or we get whatever seats in BMC, so we are trying hard to tell this to people, and hopefully the people will understand. And because the media, it is owned by only 2 people in this country, so none of the channels never show that kind of work which Delhi government has been doing. But we are trying our best to connect with people in mohalla sabhas, small door-to-door campaigns, and they really connect well. So I think it is लेकिन not जहाँ a तक मीडिया का difficult सवाल है, आपने मीडिया की बात करी मीनल जी, द मीडिया ओनली शोज शीश महल, दे शो क्या है वो लिकर स्कैम. इवन द सुप्रीम कोर्ट वाज आस्किंग वेयर इज द एविडेंस, यार एविडेंस तो दो. But how I wish they had taken a decision, how I wish they had not reserved the order and they had passed the judgment on that day and at least granted bail to Manish Sisodia, which is rather sad. So why, do tell us, what is the internal thinking माफ कीजिएगा, within the Aam Aadmi Party,
about Manish being in prison, Sanjay Singh ji being in prison, Satyendra Jain being in prison, तो आपके इंटरनल थिंकिंग क्या है जब आप लोगों की आपस में मीटिंग होती है, तो इस विषय में क्या क्या डिस्कस होता है वो जरा बताएं. frankly speaking, we are a little बेबस right now, क्योंकि पावर इन्होंने इतना मिसयूज किया है जिसकी की कोई लिमिट नहीं है. तो मनीष जी is although in a prison, his wife is not keeping well, but he is still working from inside. He's looking after the files of the education department, and Atishi ji and Manish ji both are in on the same page with the schools. New schools have opened even after Manish ji is inside the prison. There have been 2 schools in Delhi which have recently opened up, and so हम मनीष जी या अरविंद जी या मैं या कोई important नहीं है. It is the work which we have chosen, which will do for the people of the country, is important for us, and we'll achieve it come what may. Wonderful. Now, another thing is the BMC hospitals. Definitely, since you have done so much, you have been visiting schools in BMC. You must have visited the BMC hospitals also. So BMC hospitals, few of them are world class, but majority problem यही है कि if you see across Maharashtra, हमने नांदेड़ वाला इंसिडेंट देखा, संभाजी नगर वाले अलग-अलग. What is the real problem there? Why did the people die? भले the government has instituted an inquiry, but basically because we are led by a very insensitive government who doesn't care. Like they hide the facts. They don't accept that they have to change something. नांदेड़ में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, they just did लीपापोती कि कुछ हुआ ही नहीं, ये तो उसके कारण वो खुद ही मरने ही वाले थे लोग. मतलब they will just put it upon the people only because they died in the hospital. They were already so unwell that they died. They never came up with an inquiry or the health minister taking up the responsibility or owing it कि this is our problem. And I have been visiting, like you said, you should visit the government hospitals also. So I've been visiting KEM, JJ Hospital, and there are so many good facilities, good doctors. But the amount of patients they get, it is not. And lots of, like KEM, last month there was a case where this girl came from rural Maharashtra. She was 2.5-year child who was brought in ambulance. She was unconscious because she fell out something. And I was there for some patient who was admitted there, and I was like shocked to know that this girl needed a immediate MRI and all. There was no facility. The parents and the child stayed in the van for 2.5 hours waiting for a MRI to be done, and there was no communication from the hospital staff that there is nothing inside. You go to some other hospital, or the dean or the staff should have told them ki there is no space here, so you go. There was no ICU. There was no ventilators in the ICU. So these things will not change until and unless ऊपर से आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते या आपकी ऊपर वालों की नियत साफ नहीं होती. उनको देखने के लिए भी तो आपको कोई चाहिए. अभी अरविंद जी शुरू हुआ था जब दिल्ली में भी स्टार्टेड गवर्निंग दिल्ली. अरविंद जी यूज्ड टू देन गो टू एनी हॉस्पिटल एनी टाइम. अगर आज महाराष्ट्र की तो खैर सरकारी इलीगल है, लेकिन अगर आज भी महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर बोल दें कि मैं किसी भी समय किसी भी हॉस्पिटल का दौरा करूंगा और मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं मिलनी चाहिए, तो मजाल है कि वहां के डीन या वहां का स्टाफ कुछ भी बेपरवाही करे. पर यहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो भी लोग गवर्न कर रहे हैं महाराष्ट्र को, उन्हें मतलब ही कहाँ है, उन्हें सत्ता हथियाने से मतलब है. लेकिन मीनल जी ये बताएं, ये सब आपने जो कहा है ये बहुत सालों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये आपको भी मालूम है. फिर भी लोग इन्हीं को वोट देते हैं, मतलब ये समझ के बाहर है. बस ये तो अब मतलब क्या कहा जाए इस बारे में, क्योंकि अरविंद जी जैसे बोलते हैं कि अगर इनको जरूरत है तो ये चुनेंगे. अगर आपको समझता है और आप समझ जाएंगे, आपको चाहिए तो आम आदमी पार्टी क्या है. मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ. मैं एक I love to work for people, and I joined this party because it gives you a platform to give the common people a base to get educated, to get good health care, to get better basic facilities. तो आम आदमी पार्टी क्या है, जहां पर सारे इकट्ठे हो गए और हमने सोच लिया कि हमें सिस्टम को बदल देना है, अब हम चलाएंगे.
तो उस दिन ये पार्टी वहां पे खड़ी हो जाती है। गुजरात में ऐसे ही खड़ी हुई, यहाँ पे भी खड़ी हो जाएगी। आपको बीएमसी में काफी चौंकाने वाले रिजल्ट मिल सकते हैं। पर बीएमसी वंडरफुल। इलेक्शन अभी ये लोग करा ही नहीं रहे हैं। 2 साल तक इन्होंने बोल दिया कि कोई इलेक्शन ही नहीं है। I think they'll be held after the Vidhan Sabha elections next year. It will be, I think, 20. They will not do it before Vidhan Sabha because यहाँ पे इनकी हार निश्चित है भाजपा की और शिंदे गुट की। तो they will not do it before 2025. If they do it, they will definitely lose all the other elections be after that. मीनल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much for joining us on this show and on this channel for the first time. Really lovely talking to you. Thank you very much, and we are all very proud of all the work that you're doing. Namaskar. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. Namaskar. Namaste. Pradeep ji, what she said about JJ Hospital and what she said about every other hospital Yes, is absolutely yes, true. yes. Unless and until people will wake up and when there's a disaster there, and that too for a short while. Like now, आप रिमाइंड कर रहे हैं लोगों को कि भाई नांदेड़ में ये हुआ, बाकी सब लोग तो भूल चुके हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा नांदेड़ के बारे में। नांदेड़, संभाजी नगर, लोग तो भूल ही गए। ठाणे, yes, ठाणे, जो ठाणे में इतनी बड़ी must have happened कोई दूसरा युग में हो गया होगा। जी, isn't that terrible? Isn't that absolutely terrible? We live from disaster to disaster, and the reason why the BMC elections are not being held can be seen. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हेल्थ केयर में सरकार इज पुटिंग सो मच ऑफ मनी इफ यू टॉक अबाउट कांग्रेस गवर्नमेंट द सेंटर प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज इतने लाख का आपको फ्री है, इतने लाख। आई वांट टू वी शुड हैव अ प्रोग्राम। आई वांट टू नो in practicality a person going how is he benefited, because आज भी लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, उनको ढंग के फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं। they don't have money, they don't have card, they don't have a system where they can pay and they are being refused. अरे in the hospital they don't even communicate with the patient. Exactly. So क्या बात कर रहे हैं आप? we need somebody from the government to actually give a practical demonstration कि how a poor man goes to a hospital and then he doesn't have to pay anything and everything is done and they come out alive. That will be the day. That will be the day. And he doesn't come out in a body bag. Right. Because खानकर जी मुझे बोले in the show he says पोस्ट ऑफिस से आपको कार्ड आएगा और वो कार्ड से आपका ये होगा। गहलोत साहब वहां बोले 25 लाख गरीबों को, अभी 25 लाख का इंश्योरेंस गरीबों को, मेडिक्लेम। इट्स अ ग्रेट थॉट, इट इज अ फैंटास्टिक थॉट, बट 25 लाख का गरीब को कोई मिले तो इट्स आई थिंक इट्स हेवेंस अचीव्ड कि 25 लाख का उनको फैसिलिटीज मिल रहा, हॉस्पिटलाइजेशन। अरे पहले हॉस्पिटल में एडमिशन तो मिल जाए, उसके बाद बात करेंगे ना 25 लाख की। यहाँ तो अरे प्रदीप जी यहाँ तो बेड अवेलेबल नहीं होता, और आईसीयू के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, जनरल वार्ड में भी बेड अवेलेबल नहीं है, आईवी फ्लूइड नहीं है, और तो और छोड़िए वेंटिलेटर नहीं है, एमआरआई स्कैन के लिए फैसिलिटी नहीं है। सो ये 25 लाख कहाँ से, किसके लिए? एट द एंड ऑफ द डे वेयर? Anyway, we'll talk about that in just a little while. As Pradeep ji said, we'll have to have a complete show on this. Now, one of the reasons why we have not been having BMC elections could be seen yesterday. कल क्या था? विजयदशमी थी, दशहरा रैली, शिवाजी पार्क खचाखच भरा हुआ था साहब। बिल्कुल भरा ही नहीं हुआ था, बाहर भी लोग थे, जितने अंदर उतने बाहर। तो कहां से